Yes. So finally, we are in the last chapter, which is just a hype. Case study, case study, case study, case study, case study करके एक ऑरा क्रिएट किया इन लोगों ने. I'll tell you, case study is very difficult to read, but it's very easy to answer. मतलब ऐसा लंबा केस स्टडी आता है, लंबा क्वेश्चन आता है, इसलिए लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट. अंडरस्टैंड. आपको ना आपका आंसर 3 पार्ट में स्प्लिट करना है. अगर आपको सी 99% चांसेस है कि आपको केस स्टडी डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगी. दे विल गिव यू अ केस स्टडी और उस एक केस स्टडी पे हो सकता है कि 10 एमसीक्यूज दे दे. दे विल गिव यू केस स्टडी एंड दे विल गिव यू 10 एमसीक्यूज और आपको केस स्टडी पढ़ के ये आंसर करना है. आर यू गाइस क्लियर विद इट? तो ना आपको अगर डिस्क्रिप्टिव भी लिखने को आया तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है? आपको सबसे पहले पैराग्राफ में आपको खत्म करनी है समरी. 2 पेज का केस स्टडी आया तो 2 पेज के केस स्टडी को अच्छी तरह से पढ़ के यू नीड टू समराइज दैट इन 1 पैराग्राफ. इससे 2 फायदे होंगे. एक, ऑटोमेटिकली यू विल बी रीडिंग इट थरली. ऑटोमेटिकली 2 फायदे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल रीड इट थरली टू समराइज. और दूसरा, when you write that summary, at that point of time, your entire case study will get revised in your mind will start working, your brain will start working. उसके बाद देखो, केस स्टडी है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा जिसका सोल्यूशन ढूंढना है. तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. और तीसरे में सोल्यूशन. कुछ भी रिपोर्टिंग का प्रॉब्लम है तो रिपोर्टिंग के बारे में बोल देने का, ट्रिपल बॉटम लाइन, परफॉर्मेंस पिरामिड एंड ऑल दैट. समझा? समरी, समराइज, आइडेंटिफाई एंड सोल्यूशन. समराइज, आइडेंटिफाई एंड सोल्यूशन. समराइज करोगे तो वैसे भी तुम लोग के दिमाग में घंटी बज जाएगी एग्जैक्टली हुआ क्या है. और पढ़ते पढ़ते देखो, जब तुम लोग को प्रॉब्लम समझ में आने लगते हैं तो उसका सोल्यूशन भी पता चलता है. सो आइडेंटिफाई दोस प्रॉब्लम्स इन द मिडिल पैराग्राफ एंड सजेस्ट द सोल्यूशन फॉर दैट इन द लास्ट पैराग्राफ. अब केस स्टडी किस पे आ सकता है? सब पे. जो तुम लोग ने पढ़ा है उस सब पे आ सकता है केस स्टडी. दे मे गिव यू केस स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल्सो, मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल्सो, रेलेवेंट कॉस्टिंग ऑल्सो, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के जितने भी फंडे तुम लोग ने पढ़े, ये देखो उधर चार्ट दिया है. सो बेसिकली केस स्टडी मतलब अपने को बचपन में कॉम्प्रहेंशन आता था ना, कॉम्प्रहेंशन, बस उतनी औकात है. ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंट है, बट वो हाइप क्रिएट मत होने देना. यू डोंट हैव, प्लीज डोंट कीप अ नोशन फॉर केस स्टडी. रीड इट एज इफ यू आर रीडिंग सम जनरल इंफॉर्मेशन. इसको तुम लोग ज्यादा ओवर फोकस्ड होते हो, ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, या फिर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो, तो केस स्टडी विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. ये देखो, केस स्टडी इज नॉट फॉर क्वांटिटी, इट इज फॉर क्वालिटी. प्रिपेयर अ प्लान फॉर ईच इशू. मतलब बेसिकली वही जो मैंने कहा था. मैंने तो और सिंप्लीफाई करके बोला है. समराइज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, खत्म. चलो पहला वाला पढ़ लेते हैं. फर्स्ट केस स्टडी इज अबाउट पोर्टर्स 5 फोर्सेस. SWAL, Safe and Wise Advisory Limited, is well-established financial planning and risk advisory firm of the country with nationwide presence. सबसे पहले आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, दिमाग में रजिस्टर हो जानी चाहिए. नेशनवाइड प्रेजेंस, नेशनवाइड प्रेजेंस है. SWAL is engaged in selling third-party products, be it financial products or insurance products. Financial advisory business of SWAL is doing well and contributing to half of the gross revenue of the group and 2/3 of the overall group from the bottom line. मतलब profit center है. But insurance brokerage business is not performing as per expectation. Problem. समझा? How to read the theory, how to read case study. तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया.
Independent and impartial advice to clients is unique selling point of Swal. Swal was established by Mr. Kaushal Jaiswal around 2 decades ago when life insurance business goes private and when it was one division business, assurance brokerage business. Mr. Kaushal Jaiswal is a dynamic leader, presently leading the company as CEO apart from being a major shareholder in the company. Swal is widely acknowledged for two distinct features: presence in the form of sub-agency offices with professionally trained staff headed by financial advisor, where customer can take advice to discuss opinions. So basically presence. Locations are semi-commercial. Swal has a practice of signing 30 years lease whensoever taking or sub-agency office or on lease in order to reduce the lease cost and bring stability. So it is customer oriented. They are looking after stability. सीधा 30 साल का लीज ले लेते, तो उनका पहला एडवांटेज क्या है? फर्स्ट फीचर, वाइडर कवरेज, longevity. Can I say this is a solution? This can be used as a solution. Secondly, you have a wide range of products to be sold. You have 15 years agency agreement and all that. Basically, this paragraph tells you that you have a wide range of products. So basically, listen to me carefully. What is the advantage of this company? Wider coverage plus longevity, long-term presence in the market, plus a wide range of products being offered by the company. 22 out of 23 insurance companies are private and registered themselves with the regulatory between 2004 and 2013 for a period of 25 years. Considering the default by few insurance firms and increasing customer complaints, regulator of insurance business in country tightens the registration criteria and harden the norms. Typically, each of the sub-agency office comprises of 3 regular and 1 contractual employee. 3 regular and 1 contractual employee, 1 being financial planner, advisor, 2 being sales and relationship officer and contractual worker in the role of support staff. एक ही वर्कर है, सपोर्ट स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, बाकी जो डिसाइडिंग फैक्टर है सेल ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड ऑल, ये सारे बंदे रेगुलर एम्प्लॉइज है. आपको समझ में आ रही है? सिर्फ सपोर्ट स्टाफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है. मतलब अगर शिफ्ट हुआ तो मेरे बिजनेस को अफेक्ट नहीं होगा. On the on-roll number of employees engaged in assurance business is 1564 from 720 5 years ago. Up till 3 years ago, number was 845, but since expansion of sub-agency office division is around 1500. Okay, market trend is changing. Can this be a problem? लिख के रख देने का. Market trend is changing. Each insurance company has their own network. That too at a more prominent location. अपना semi commercial area में competitor का prominent location पे. Can I say this is one of the problems? Can I say this will create a problem for us? अरुंधति सोच रही है क्या बोल रहा है ये. Are you following Arundhati? Okay. Being in a service industry and further in order to ensure wider market reach to compensate the loss of profitability in sub-agency office business, Swal has established its own e-platform, Lay. If you cannot reach to the customer of premium area, you have started your online portal. Policy at a click. Can I say this is a solution? आपका problem है growing competition. Your competitors are in the prime area, you're not. But you have online portal. So
without changing your location, without changing your base, which is taken for 30 long years, you can still cater just by using marketing techniques in prime areas. सेल्स फिगर्स देखो 2019 2020, ये इधर से आ रहा है उल्टा, ऐसा आ रहा है. लुक एट योर सेल्स, ब्रोकरेज बिजनेस 280 का 298, देन 312, देन 320, देन 326, और मार्केट साइज भी ग्रो हो रहा है. सब एजेंसी ऑफिस डिवीजन, revenue earned by each division of assurance brokerage division in terms of client, ये भी देखो 20 से 30 एज ग्रुप, 30 से 40 एज ग्रुप, 40 to 50, 50 to 60 and 60 plus. ई प्लेटफॉर्म डिवीजन 326 टोटल बिजनेस में से 46 is given by e platform, so around 14% ऑनलाइन से निकाला है आपने. Since the profitability of sub-agency office division is declining, hence the strategic review of committee of board of directors are concerned about the company's declining profitability due to poor performance of sub-agency office division and suggests that sub-agency office division should be sold off. That SWAL shall reposition its assurance business as an online solution. Okay. एजेंसी का प्रॉफिटेबिलिटी चेक करो. रेवेन्यू 250 का 272, 272 का 280, बट प्रॉफिट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. 31 का सीधा 16 हुआ है, 16 का 18 हुआ, दैट इज फाइन, बट 31 का 16 हुआ है, मतलब इन शॉर्ट 31 का 18 हो रहा है. 8% long term debt, current liabilities have also increased. Tax rate is 22%. Nature of cost incurred by sub-agency office. Nature of cost incurred by sub-agency office division is more or less balanced between the variable and fixed cost are largely committed in nature. Fixed cost is largely committed in nature, मतलब तुम लोग 30 साल के लिए वैसे भी लीज लेके बैठे हो. Your employees are permanent. So naturally your fixed cost is straightforward and it is largely committed in nature. But CEO is not agreed with the suggestion made by strategic planning committee because CEO is of the belief that SWAL's USP or business model is sub-agency offices through which they ensure independence and impartial advice to the clients. In next board meeting, board is expected to pass resolution to this agenda item in order to decide whether to continue or to sell sub-agency office division. Assess competitive environment. Present only 2 point. Okay. And evaluate the case of holding the sub-agency office division backed by financial viability. अच्छा, आपको याद दिला दूं, माइकल पोर्टर बेसिकली 5 फोर्स मॉडल हम लोग ने डिस्कस किया था. 5 फोर्स मॉडल ऑफ माइकल पोर्टर सेज you need to check bargaining power of suppliers and bargaining power of buyers. Bargaining power of supplier and bargaining power of buyers. If you do not have bargaining power in both, sell off your business and sit idle. But if you have a bargaining power in terms of buyers, you may actually rule the market. अपने केस में बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, अपने से ज्यादा है. We are not enjoying bargaining power in case of buyers. Buyers are enjoying the bargaining power supremacy because of the competition. Supplier is not a problem, and then threats of new entrant and threats of substituting your product. That is also possible because there are various companies available. तो ये सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम पता चल गए. उसके बाद माइकल पोर्टर का नाम लिया इन लोगों ने. 5 फोर्स मॉडल, मतलब यही 5 चीजें हमको लिखनी है. द लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल राइवलरी. तो पहले तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर एंड बायर. बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो आप कुछ नहीं कर सकते.
You have to go as per buyer's requirement. It is going to be a customer friendly market then. लेकिन if you are enjoying the monopoly, that means bargaining power is not with buyers, then you can dictate your terms, which is not the case in our scenario. New threat of entrance possible है. Threat of substitutes तो बिल्कुल possible है, because they are working in a better area than us. आपको समझा? एक बार तुम लोग ने प्रॉब्लम समराइज कर लिया ना, तो तुम लोग को ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम भी पता चलेंगे, सोल्यूशन भी पता चलेंगे. उसी को फ्रेम करना है. देखो, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, कंट्रोल ओवर वैल्यू चेन. मतलब मुझे जब चाहिए तब प्रोडक्ट अवेलेबल करके मिल रहा है, तो ही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. कंप्लायंसेस फटाफट सॉल्व हो रहे हैं कंपनी से. सी, आई एम इन नो ब्रोकिंग बिजनेस, तो मैं किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अगर उन्होंने कंप्लायंस प्रॉपर नहीं किया तो मेरा बिजनेस भी ठंडा पड़ जाएगा. जैसे मैं अगर LIC एजेंट हूं और मैंने आपको पॉलिसी दी, बट अगर LIC उसको एग्जीक्यूट नहीं करती ढंग से, तो मेरा भी बिजनेस जाएगा ना. देन यू हैव इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, देन यू हैव सब्स्टिट्यूशन अमंग द ब्रांड, एंड फाइनली सप्लाई ऑफ अदर फैक्टर्स. कोई भी 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ये सारे पॉइंट समझ आए आपको? सप्लाई ऑफ अदर फैक्टर्स मतलब जितना ज्यादा सर्विस आप दे सकते हो अदर फैक्टर्स, उतना बेटर है. लेकिन बट दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑल्सो. पर मैं जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करता हूं, उतना मेरा रेवेन्यू बढ़ने का चांस है. तो मेरी लीज रेंट तो कांस्टेंट रहेगी. लीज रेंट फिगर विल बी कांस्टेंट. माय फिक्स कॉस्ट विल बी कांस्टेंट. 3 एम्प्लॉइज मेरे परमानेंट है, वो भी कांस्टेंट. तो एक्सपांशन विल गिव मी द बेनिफिट. सब्स्टिट्यूशन अमंग द ब्रांड पॉसिबल है, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 पॉइंट्स है. यू आर सपोज टू राइट एनी 2. बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, सबसे पहले तो नंबर ऑफ बायर्स, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एंड स्विचिंग, तीनों पॉसिबल है. ये अरे हम लोग ने डिस्कस भी तो किया ये. Third one is entry of new entrant. Less number of life insurance licenses by regulator due to tough regulations. मतलब एंट्री तो नए लोगों की कम होगी. That's an advantage. मतलब मुझे ना न्यू फ्रंट नहीं खोलना पड़ेगा फॉर कंपटीशन. लेकिन लेस नंबर ऑफ इंश्योरेंस एजेंट ड्यू टू न्यू ऑथोराइजेशन कंपनी, तो मेरा भी तो मैन पावर कम हो रहा है. एंड देन फाइनली लर्निंग कर्व एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जितने ज्यादा ऑफिसेस होंगे उतना तुम लोग का कवरेज ज्यादा है. Your existence in all semi-commercial cities is a huge one, because around 580 offices है आपके पास in 580 cities. तो मतलब कहीं से भी प्रॉफिटेबिलिटी आप मैनेज कर सकते हैं. इफ योर एग्जिस्टेंस इज ओनली इन वन सिटी, तो आपके ऑप्शंस भी कम होते हैं रेवेन्यू पे. बट इफ योर एग्जिस्ट, जैसे जेकेएससी को रेवेन्यू मुंबई से मिले, अहमदाबाद से मिले, गुजरात से मिले, या बैंगलोर से मिले, चेन्नई से मिले, क्या फर्क पड़ता है? So that advantage you already have. Substitution, you're supposed to write about competitive rivalry. Then lack of differentiation. क्या है? आपको याद है मैंने सिखाया था आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? वो तो इसमें है नहीं. जो पॉलिसी आप बेच रहे हो वही मैं बेच रहा हूं. देखो, मैं कार बेचता हूं ना, तो मैं कार में कुछ ना कुछ बोल सकता हूं कि बाबा मेरा माइलेज ज्यादा है, मेरा सेफ्टी टेस्ट पास होता है, मेरे पास एडिशनल फीचर्स है, मैं 5 साल का वारंटी देता हूं. आई कैन डिफरेंशिएट इट. इंश्योरेंस पॉलिसी में मैं क्या बोलूंगा? मैं जो ऑफर कर रहा हूं, मेरा कलीग भी, मेरा काउंटर पार्ट, मेरा राइवल भी वही ऑफर कर रहा है. सो देर इज नो डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट. स्लो मार्केट ग्रोथ, एंड द वर्स्ट पार्ट इज एग्जिट बैरियर्स. अगर मैं बाहर निकलने का भी सोचूं ना, तो वो 578 का, वो जो 580 ऑफिसर्स लेके बैठा हूं, उसका कॉस्ट कहां से निकलेगा? एंड देन फाइनली फाइनेंशियल टर्म्स में अगर बात करनी है, तो यू आर जस्ट सपोज टू टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी.
Well, your margins are profitable, but then your profit is going down. Then you are supposed to comment on current ratio and quick ratio and debt equity ratio. Your work is done. तो बेसिकली करना क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज एंड योर कंपटीशन. समझ में आ रहा है? और तुम लोग को ये सब परसेंटेज वगैरह भी नहीं मेंशन करोगे, सिर्फ पॉइंट्स मेंशन करोगे और छोटा सा एक्सप्लेनेशन दोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे. आपके केस में तो एमसीक्यूज ही आएगा, तो यू नीड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दिस. क्लाइंट्स डेमोग्राफी, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, लीगल एस्पेक्ट्स, लूजिंग यूएसपी, ये सारे पॉइंट्स हैं. मतलब मैं अगर डिवीजन बंद करता हूं, डिवीजन बंद करने से भी मुझे प्रॉब्लम होने वाला है. माय क्लाइंट्स इन दैट एरिया विल बी अफेक्टेड. देखो, आप रहते हो उल्लासनगर, मैंने उल्लासनगर में ब्रांच खोली, आपने एडमिशन लिया, मैंने ब्रांच बंद कर दी. यानी ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं. इट विल डेफिनेटली क्रिएट डिस्कंफर्ट फॉर यू एंड माय कस्टमर विल नॉट बी हैप्पी इफ आई डू दैट. आपको समझ में आ रही है बात? तो मैं सेंटर्स बंद करता हूं, इसका मतलब क्लाइंट्स विल बी अफेक्टेड इन दैट एरिया. रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को भी तो निकालना पड़ेगा. अच्छा, ई पोर्टल पे मैंने ज्यादा फोकस किया तो मैं सबको अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा. नाउ इफ जेकेएससी हैज अराउंड 250 फैकल्टीज, जेकेएससी डिसाइड्स कि भाई फेस टू फेस आज से बंद, सिर्फ ऑनलाइन ही चलेगा, तो मेरे को तो हर एक सब्जेक्ट के 2-2 फैकल्टीज भी बहुत हो गए. जूम का आईडी ले लूंगा मैं 2000 का कैपेसिटी का, एक इंटर का बैच, दूसरा इंटर का बैच, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, 2 फैकल्टीज का काम हो गया. फिर एग्जिस्टिंग फैकल्टीज का क्या करूंगा मैं? सो इफ यू आर कन्वर्टिंग योर बिजनेस इनटू ऑनलाइन पोर्टल, योर एम्प्लॉइज में रेजिस्ट, देन लीगल एस्पेक्ट्स एंड लूजिंग यूएसपी. आपका 1-to-1 कॉन्टैक्ट ज्यादा अच्छा है कस्टमर से, दैट यूएसपी यू विल बी लूजिंग. अरे समझा? चलिए, सेकंड केस लॉ. अब सेकंड केस लॉ ना, कुछ दम नहीं है उसमें. ये सारे ना केस स्टडीज मैं तुम लोग को एक ना बाद में एक लिंक भेजता हूं. ओके, सी, अहमदाबाद ब्रांच है एंड बोरीवली ब्रांच है, मुंबई ब्रांच है, राइट? अंधेरी, बोरीवली. और कोई ब्रांच? मुलुंड. अरे मुलुंड अपना ही है, ठीक है. मुलुंड, बोरीवली, अंधेरी, वाशी, ठीक है. ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम मुंबई एंड अहमदाबाद देयर इज नो अदर ब्रांच, नो? ठीक है. मैं ना तुम लोग को मेरा एक केस सिनारियो का एक मॉड्यूल आता है इंस्टीट्यूट का, पता है आपको? केस स्टडी एंड केस सिनारियो. उसमें अराउंड 20-21 14-15 केस स्टडीज, 14-15 केस सिनारियोस. तो मैंने क्या किया है, चैप्टर वाइज केस स्टडी केस सिनारियो कवर कर लिए. मतलब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से रिलेटेड जो भी केस स्टडी केस सिनारियो एक साथ कवर कर लिया. उसका भी लिंक मैं आपको भेज देता हूं. अहमदाबाद वाला कोई टच में रहेगा तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करे. आपका नाम और नाम तो जरूरत नहीं है, बैच नंबर डाल दो, आई मीन ब्रांच नंबर, ब्रांच नेम. और मुंबई का आई थिंक अंधेरी के ग्रुप पे मैं हूँ शायद. उस दिन कोई मेरा कॉस्टिंग का नोट्स मांग रहा था. मुंबई का तो पहुंच जाएगा. अहमदाबाद कर दो प्रीति, चलेगा? प्रियांक, हाँ चलेगा, कर दे. तो सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट में ना अहमदाबाद के, तो तुम लोग का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो यहाँ पे प्रियांक के थ्रू होगा. और मुंबई तो खैर मेरे पास है यहाँ पे, तो आईडी तो मैं डाल दूंगा उसमें. चलिए, केस स्टडी 2. नाउ केस स्टडी 2 एक्चुअली इज वेरी सिंपल. BA is the second largest airline in country X. देखो, second largest airline. Aviation industry in country X is growing fast. So market है. 2011 में 45 million people traveled to, from or within the country X. By 2020, that is double to 100 millions. So there is a potential. There is a potential. धंधा है, customer है. This number is expected to
treble at 300 millions by 2030. Also, by 2025, country X is expected to have its third largest air transport market in the world behind US and China. Basically, you're in a potential industry. So it's a advantage. Government is trying to meet significant growth potential to aviation industry. So government is also supporting aviation industry. It is not against it. So there is no constraint as such. However, it will create challenges also for the airline industry and its industry partners. Bad news. Government support करता है पहले बोला, लेकिन बाद में they are having some, they are giving some challenges. Government also wants to ensure the broader business and policy environment should not place hurdles which inhibit growth and reduce the level of benefits that aviation can deliver to the nation. The industry, its supply chain partners, and the government and policy makers have a clear mandate to work in a collaboration with a common goal. Despite of operating in world fastest growing market, BA struggles for passengers. Market size favorable, market share is an issue. Also, BA is facing following problems. अब तो problem का list ही दिया है. Aviation turbine fuel constitute about 40% of operational cost, are taxed higher here than anywhere in the world. Tax ज़्यादा है. Central government charges 14% duty, while the state government pile on their own local tax. So taxation is the issue. Currency depreciation is hitting airline harder. With the entry of low budget carriers, full service carrier like BA that have a high overhead cost has been forced to offer discount. मतलब जो एयर डेक्कन आने के बाद जेट एयरवेज ने फेस किया, लो कॉस्ट एयरलाइन आएगा तो there is a competition created. And if there is a competition created, मुझे competition में survive करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ेगा. अब छोटा एयरलाइन कम चार्जेस रखता है तो उसके ओवरहेड्स भी तो कम है. मेरे ओवरहेड ज्यादा है. So discounted ticket prices will have a negative impact on my profitability. Loss नहीं होगा, but loss of profit हो सकता है. In fact, this has happened in the industry. इसलिए उन्होंने राउंड ट्रिप चालू किया. पहले राउंड ट्रिप जैसा कुछ नहीं था. मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, खत्म हो गया टूर. अब ऐसा नहीं होता है. फ्लाइट उड़ता है दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से बैंगलोर, बैंगलोर से मुंबई, मुंबई से गोवा, एंड देन इट इज शेल्व्ड. दिन में 5 राउंड मारते हैं ये लोग. That is why flights are delayed these days. पहले लाइफ में कभी फ्लाइट डिले नहीं होता था. 920 का फ्लाइट तो 920 को ही उड़ेगा. लेकिन अब नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हर एक एयरपोर्ट पे थोड़ा थोड़ा डिले हुआ तो आपका शाम का फ्लाइट तो आधा घंटा डिले पकड़ के चलो. इसलिए देखना, मॉर्निंग फ्लाइट जनरली लेट डिले नहीं होते अनलेस देयर इज अ फॉग. इवनिंग फ्लाइट जनरली डिले होते क्योंकि दुनिया भर घूम के आते हैं ये लोग. Continuous improvement in tourism infrastructure, tourism policies, human resource development, and airport infrastructure density are among the areas that could further enhance country's competitiveness. The intense competition among domestic airline carriers, the need to capture a slice of ever-expanding market and passenger price-sensitive market makes the airline difficult. It's difficult to raise ticket prices. Together, these factors have been now plunged the country's ex-aviation industry into most precarious phase in the last 3 years or so. BA is facing huge competition. BA has been appealing to the government for reduction in taxes and fuel. Advise BA. Advise the strategy the BA should follow
in order to gain superior performance and competitive advantage. अच्छा, दो फैक्टर्स होते हैं आपको याद है ना, एक लो कॉस्ट एडवांटेज where cost is minimized and second one is product differentiation. अब लो कॉस्ट एडवांटेज क्या है आपके पास ऑप्शन? कीपिंग लोअर प्राइस देन कॉम्पिटिटर्स और match the price competing service and increase profitability. अब कॉस्ट रिडक्शन तो सी 40% of your total cost is contributed by fuel. You have already applied government for subsidies. तो अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया तो एक चीज याद रखना, गवर्नमेंट सब्सिडी सबको देगा. So that gap will still be there. Are you understanding this? चलो एक छोटा एयरलाइंस है मयूरेश एयरलाइंस और एक बड़ा एयरलाइंस है जेके एयरलाइंस. तो जेके एयरलाइंस अप्लाइज फॉर सब्सिडी, तो गवर्नमेंट सिर्फ जेके एयरलाइंस को सब्सिडी नहीं देगा, इट विल बी फॉर द एंटायर इंडस्ट्री. तो कॉस्ट तो मेरी भी कम हो सकती है. Unless and until I contribute something to unless and until JK Airways contribute something to the government, के सारे government employees को 50% discount, it will be considered as semi government carrier. सिर्फ अपना आईडी दिखाने का 50% discount. If government is getting some benefit, government will pass on the benefit. Government will not come to me, बाबा मैं 50% discount किसको नहीं दे सकता, मैं छोटा एयरलाइन से, मैं वैसे भी टिकट चार्जेस कम रख के चल रहा हूं, मेरे ओवरहेड्स कम है इसलिए सर्वाइव हो रहा. तो ऐसा हो सकता है कि पॉलिसीज में डिफर. देन द डिफरेंशिएशन एडवांटेज, सी quality. On the basis of service, you can actually create difference between you and budget airlines. अब budget airlines सुनो, जब ये एयर डेक्कन लॉन्च हुआ था ना कैप्टन गोपीनाथ जी का, उसका एडवर्टीजमेंट था ₹1 में गोवा. बाकी लोग तब चार्ज करते थे 1800 रुपया, 2000 रुपया, ₹1 में लेके जाता था. पर ₹1 पे एस्ट्रिक मार्क था. ₹1 टिकट प्राइस, एयरपोर्ट चार्जेस 100, फ्यूल चार्जेस 250, ऐसा करके कुछ 700-800 रुपया होता था टिकट. स्टिल 1800 से 700-800 बेस्ट है ना. हाँ, लेकिन पानी का बॉटल तक नहीं मिलेगा, तुम्हें खरीदना पड़ेगा. बट पीपल डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो नो फ्रॉम बजट एयरलाइंस. वहां पे किंगफिशर क्यों पॉपुलर हुआ, जेट एयरवेज क्यों पॉपुलर हुआ? बिकॉज दे वर स्टिल सर्विंग फूड and the service of Kingfisher was the finest, quantity wise, quality wise. Of course, that is the reason why probably it went into losses. But product differentiation advantage you should have. दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास डिफरेंशिएशन एडवांस के लिए? प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स, क्लीन एंड कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट. इंडिगो लोग प्रिफर नहीं करते, क्यों? क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक सीट है, सिटिंग कंफर्ट नहीं मिलता. एयर इंडिया प्रिफर करते हैं, लेकिन टाइम पे कौन उड़ता है? इंडिगो. सो दे आर स्कोरिंग द 1 point over एयर इंडिया. दैट इज हाउ थिंग्स वर्क. देखो, मुझे अगर 1.5 घंटा ट्रैवल करना है तो मैं कैसा तो करके बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे टाइम पे छोड़ दे भाई. आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड, तो लेग रूम नहीं है तो भी चल जाएगा, मैं मैनेज कर लूंगा, बट मुझे टाइम पे जाना है. ऐसा नहीं कि मेरा 9 o'clock का फ्लाइट है, मुझे बाद में पता चलता है 10:30 को उड़ेगा, तो 10:30 को तो मैं उतर लैंड करूंगा वहां पे, तभी उड़ के क्या फायदा है? आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड. सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विल मेक अ डिफरेंस. The company must focus on geographical region and short point to point flights to reduce cost. मैंने एग्जांपल दिया था आपको रोटेशनल बेसिस पे और राउंड ट्रिप. यही सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं. दैट इज व्हाट योर केस स्टडी इज. तो केस स्टडी इज जस्ट अ हाइप. अंडरस्टैंड, समराइज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, दैट्स इट. और आपके केस में तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी बिकॉज एमसीक्यूज आएगा, तो डिस्क्रिप्टिव लिखने की भी नौबत नहीं आएगी. आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में बात करनी है. समझा? नेक्स्ट,
ट्रिपल बॉटम लाइन, अभी देखो ये ना पढ़ने की भी जरूरत नहीं आपको, ट्रिपल बॉटम लाइन याद है? सोशल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल। इट इज अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेजर, जिसको हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। यस, हाँ, प्लैनेट, प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट, वो सब ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है, सिर्फ पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट का पोपट पंच मत करना। पीपल रिप्रेजेंट एनवायरमेंट, पीपल रिप्रेजेंट सोशल, पीपल रिप्रेजेंट सोशल, प्लैनेट रिप्रेजेंट एनवायरमेंट, एंड प्रॉफिट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो बस उसी पे पूछेंगे आपको, सिर्फ उसका ही कमेंट देना। अगर इसका आप आंसर देखोगे, ये देखो क्वेश्चन में सिनारियो क्रिएट किया है, आपको उसमें से सोशल पॉइंट्स निकालने हैं। एम्प्लॉयज का भला किया, कंसेशनल सर्विसेज दिया तो सोशल पॉइंट, अनदर सेंटर चालू किया जहां पे कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक इंप्लीमेंट की तो फाइनेंशियल, वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको डीकंपोज करने के लिए नया प्लान डाला, एनवायरमेंटल। इसमें रीड करने जैसा कुछ नहीं है, यू कैन हैव अ रीड, आई मीन इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है, तुम लोग आराम से खुद रीड करके डिसाइड कर सकते हैं। एक काम करो, टेक 5 मिनट्स टू गो थ्रू दिस ट्रिपल बॉटम लाइन। तुम लोग सिर्फ आंसर पढ़ो तो भी तुम लोग को समझ में आएगा करना क्या है। इट विल बी अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ केस स्टडीज। ट्रिपल बॉटम लाइन पूछा तो पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, इसके बारे में बात करनी है, मतलब सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक। बस वो पॉइंट हाईलाइट करने केस स्टडी में से तुम लोग को। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, जस्ट गो थ्रू दिस सॉल्यूशन, go through the solution, not the question, go through the solution.
चलो आगे बढ़ते. You guys are clear till first three case studies? You need anything else? Arey, are you guys clear with first three? आगे बढ़ते हैं. Case study 4. It's about performance measurement in not-for-profit sector, NPO. Yes, yes, yes. They will give you a case study and they will send you, they will ask you MCQs. एक केस स्टडी पे 10 क्वेश्चंस पूछ लेंगे या 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे विद इन एमसीक्यू फॉर्मेट. खत्म. तो डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखने को आएगा ऐसा लगता तो नहीं है. सो दैट इज व्हाई आई सेड समराइज, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस. और अगर एमसीक्यू दिया तो आपको तो डायरेक्शन भी पता चलेगा. जैसे अभी ट्रिपल बॉटम लाइन दिख रहा है तो आपको पता है ओके यहाँ ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में सोचना है. बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल दिख रहा है तो ओके यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में सोचना है. इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू. केस स्टडी एनी विच वे इज सिंपल. तुम लोग को तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा तो इट विल बी डेफिनेटली वेरी सिंपल. सो वी विल बी डूइंग सम एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडीज हियर आल्सो. नहीं अभी आई इंस्टीट्यूट ने कुछ देखो हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग में के और प्राइसिंग में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में काफी सारे केस स्टडीज किए जिसमें एमसीक्यूज था. अगर आपको याद है एक क्वेश्चन आता था उस पे 5-6 एमसीक्यूज थे. प्रॉफिट रिडक्शन मैंने तुम लोग को शॉर्टकट भी सिखाया था. उसमें सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अगर या सो वैसे वाले केस स्टडीज आएंगे. चलो लेट्स गो फॉर फोर्थ वन. द वर्ल्ड फेम ताज महल is situated on the banks of Yamuna River in the city of Agra, Uttar Pradesh. Known for its beautiful design and counted as one of the 7 wonders of the world. And the city attracts a lot of tourism from all around the world. The tourism is one of the main sources of livelihood for its residents. Consequently, cleanliness and maintenance of garden area within the Taj Mahal campus is the prime importance in order to sustain and develop this industry. The local government has recently employed a contractor to clean and maintain the garden area within the Taj Mahal campus. The contractor uses cleaning machines pulled by horses to avoid pollution. I think environmental factor is met. The contractor has been selected through the online competitive tendering and bidding process. Matlab, you should have a low cost advantage because tendering हो रहा है तो minimum selling price will be accepted. और minimum selling price अगर accepted है, minimum selling price अगर expected है, तो मेरा cost structure में minimum रखना पड़ेगा मुझे. Majority of the litter comprises of plastic waste, while some portion also includes glass, aluminum cans, paper, and cardboard. A detailed log is held by the contractor about the waste that has been cleaned and time taken for cleanup and number of horses used, etc. This log is also checked and signed by local government officials. This record is used to process payment at the end of the month. In addition to contracting, local government has also placed bins at various locations within the campus for the public to dispose their waste. The Nagar Nigam's workers clean these bins every morning. Again, detailed logs of manpower and other resources employed are kept by the respective department. In addition, government has started a mobile messaging system whereby the public can message the concerned department if they find a litter anywhere in the campus. Depending on whether it is from overflowing bins or scattered waste, the Nagar Nigam's workers will take action to clean it within 12 hours.
The a detailed log of these operations is also maintained. Patrons can also suggest measures for improving cleanliness on the above mentioned areas. Due to its importance to the economy, the local government has allotted substantial budget. The local government has allotted substantial budget of these operations for these operations. At the same time, it is essential to know if this is sufficient for the purpose of maintaining the cleanliness in the campus. Therefore, government wants to assess whether the city is getting good value for money from expenditure, propriety they are asking for. So the value of money concept can be looked at from three perspectives: economy, efficiency, and effectiveness. परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन जैसा लग रहा है. Economy, efficiency, and effectiveness. Naturally, it's a non-NPO. So economy has got nothing to do with profitability. Economy means reduction in cost. Are you getting me? हाँ. तो ये मत बोलना कि इकोनॉमी कैसे आ सकता है when it is non-profit organization. Economy means reduction in cost, efficiency, and effectiveness. The internal audit department that has been requested to undertake this study has requested for guidelines on whether the audit should focus on economy and efficiency of the Taj Mahal campus cleaning operations or on effectiveness of the same. Economy and efficiency audit assess whether the same level of service can be procured at a lower cost or resources, while effectiveness of audit assesses whether better services can be procured at the same cost. समझ रहे हो? Depending on the outcome of these audits, if required, policy decisions like requesting for additional funding from the state government, alternate policy measures like levying penalty for littering, etc., can be taken. Recommend guidelines to assess economy, efficiency, and effectiveness of Taj Mahal and the campus cleaning operations. Identify challenges involved in the assessment of effectiveness. And third one is recommend general guidelines how the audit team may conclude the audit based on the combined outcome of economy, efficiency, and effectiveness. Now let's understand this. I'm not going for solution directly. You first read the entire case study once again. Okay. And then don't read the answer. While reading the question now, you have realized what exactly are we supposed to answer. We are supposed to answer about the assessment of economy, efficiency, and effectiveness factor that you can extract from the question. Challenges also you will come to know when you read the question for the second time now. And then if these are the problems, what are the solutions? We are back to square. Just take 2 minutes, 3 minutes, but I want you to do it on your own. Answer to khair tum log ke paas available hai, but you need to understand how to reach to that answer. So kindly read the entire case study now.
चलिए, let's get started. You're supposed to first of all assess everything under economy, efficiency and effectiveness. बराबर. अच्छा, economy में क्या क्या आएगा? Economy will have all those factors which are saving your cost. बराबर. So you must bifurcate all your cleaning. You are currently incurring cleaning expenses, but don't incur that as cleaning expenses. Split that in several cost centers so that जैसे अलग अलग एक्टिविटीज होगा तो फिक्स कॉस्ट भी कम हो सकती है. वैसे यू कैन actually split the cost structure. जैसे litter pickup can be one cost. The one who's riding that, the one who's driving that cart pulled by these horses, that salary can be one category. Disposal of wastage can be another category. So if you have different cost centers, you can actually implement cost reduction technique for any one of them. लेकिन अगर आप पूरा का पूरा खर्चा सिर्फ एक ही क्लीनिंग एक्सपेंसेस के तौर पे अगर चार्ज कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल नॉट हैव दैट advantage or that option of bringing down the cost structure. सेगमेंट वाइज अगर कैलकुलेशन किया तो हो सकता है कि चलो ठीक है, क्लीनिंग चार्जेस में 4 वर्कर के बदले 3 वर्कर को काम पे लगाऊं तो एक का सैलरी बचेगा. So split your expenses into different cost centers. Then tendering process, when you talk about, make sure that the contractor is getting the order in is offering required quality of service, lowest price. So sacrificing quality will not be an option available. Plus your beans which are installed, those beans are to be purchased at a lower price. Labor, material, disposal van expenses. I explained all these things. Also, you need to focus on quality of cleaning to be achieved. सुबह उठाने का कचरा, शाम को उठाने का, दोपहर को उठाने का, that can be planned. See, like I'll give a simple example. एक एरिया है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक सुबह के टाइम पे होता है, तो डोंट गेट योर व्हीकल इन द मॉर्निंग, गेट योर व्हीकल इन द आफ्टरनून, तो आपको भी टाइम मिलेगा. जैसे ताजमहल में सबसे ज्यादा फुटफॉल होता है मॉर्निंग से लेके 11 o'clock 12 o'clock तक, और उसके बाद आफ्टरनून 6 से लेके रात तक. जनरली कोई प्रिफर नहीं करता अनलेस ऑप्शन नहीं कि 12 बजे कड़ी धूप में कोई मार्बल पे खड़ा नहीं रहता. सो व्हेन देयर इज less crowd, when there is less footfall, you can implement this procedure. Time will also be saved. Now, what is efficiency? Volume of input consumed to derive the desired level of output. Productivity जिसको बोलते हो आप लोग. Checking logbooks. आपको पता चलेगा how resources were utilized and what is the outcome of those utilized resources. Then you can also find out cleaning cost per square feet or square meter. Depends on the parameters you have. मतलब पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट अगर इतनी है तो यू कैन बार्गेन ऑन दैट, यू कैन ब्रिंग दैट डाउन. मतलब मुझे पता चलता है कि ओके ये टोटल एरिया से 100 स्क्वायर मीटर है and I have incurred 10,000 on that. So 100 rupees per square meter is my cost. So it's like activity based costing only, no? So bring down your cost of that segment, of that cost center. Automatically your overall cost structure will be benefited. Then you have multiple categories of gardens. So accordingly, the cost will change.
So since you have a logbook, you'll have to go through all these. You'll have to do the audit of all these things. And finally, the data collected from mobile messages should be investigated. Frequency and area of campus regarding which the complaints are maximum frequent. मतलब जैसे आपको मैक्सिमम डिमांड फलाने फलाने एरिया से आ रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ having 2 rounds there. You can think of applying penalty there so that the wastage will be reduced. You can take some action if you come to know the areas in which complaints are more. And finally, effectiveness. अभी effectiveness के लिए सबसे पहले तो कचरा क्या है? What constitutes litter? वो तुमको पता है अभी फिलहाल वो सूखा कचरा और गीला कचरे का डिफरेंस है. So why the distinguish required? Why these कचरे को क्यों distinguish करते हैं? Because the use and the disposal methods are different. Use is different, disposal methods are different, so they have to be. Yeah, I said that, Shrija. So that is a reason why it has to be segregated. तो यहाँ पर भी लीटर में क्या आएगा? When you say litter, लीटर में तुम लोग के लेस के रैपर्स आएंगे, बिस्लरी का बॉटल भी आएगा. So you can always have 2 different segments, like plastic litter is different and non-plastic is different. जैसे वो चाय के कप होते हैं, कार्डबोर्ड के कप्स and all that. You need to classify that into different parts. It is possible to pick up every plastic bag and bottle and empty soft drink can. Hence, the government authorities must be clear on what constitutes litter. The tolerance level of each type. The tolerance level of aluminium can or dry leaves will be different. Because few of dry leaves may be left behind even after cleaning, quality of waste collected would be an indicator. मतलब देखो, सूखा कचरा पड़ा है, झाड़ का पत्ती गिर गया. झाड़ के पत्ते गिरते हैं सूख के, उसके बाजू में प्लास्टिक पड़ा है, उसके बाजू में टीन पड़ा है, तो टीन एंड प्लास्टिक तो उठाना पड़ेगा. ड्राई पत्ते एक बार नहीं भी उठाए ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है. आपको समझ में आ रहा है? सो लीटर में क्या क्या आता है? ड्राई पत्ते हो सकते हैं, देयर कैन बी प्लास्टिक, देयर कैन बी कार्डबोर्ड, देयर कैन बी पेपर, कुछ भी हो सकता है. तो ड्राई लीव्स इज ऑल्सो कंसिडर एज लीटर. पहले उस पर गाइडेंस ले लो. नहीं है तो मैं उसके पीछे नहीं लगूंगा. बहुत बार ऐसा होता है कि ड्राई लीव्स को एक साथ जमा करके आग लगा देते हैं एंड डिस्पोज इट ऑफ देयर एंड देयर. सूखे पत्तों को एक साथ जमा कर दो, कैरी करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी. यू पिकअप प्लास्टिक, यू पिकअप कार्डबोर्ड, कोल्ड ड्रिंक के टिन्स, कॉफी के कप्स, लेस के रैपर्स, ये सब डाल दो ना तुम लोग, डम कर दो ये. बट जो सूखे पत्ते हैं, जो ड्राई लीव्स है, उसको एक साथ अक्यूमुलेट करके एक ही जगह पे काड़ी लगा दो. So you will not be required to carry that. You can't use your bin for this when it can be disposed immediately. हाँ, लेकिन उसमें भी नॉर्म्स होंगे. ताजमहल है वो, तो things can get polluted also. On a large scale, if you can't do this. Certain other parameters like safety standards should also be defined. Safety problems could be cut from sharp objects like glass. इनका काम एक्चुअली भयंकर होता है. तुम लोग किसी ने बॉटल फूट गया तो बॉटल भी लोग डस्टबिन में डालते हैं, एंड देन द डस्टबिन इज the ingredient of that dustbin are shifted somewhere else. अब ये लोग तो सीधा पैर से दबाते हैं, हाथ से दबाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनके हाथ में कट हो जाए. That is also possible. I hope you are understanding what I'm saying.
अपने घर से कचरा कोई और उठाता है तो वो कहीं तो डंप करते होंगे। तो इन दैट प्रोसेस किसी ना किसी का हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है। सो सेफ्टी मेजर्स क्या है वो यू हैव टू सी। गिविंग देम ग्लव्स can also be one of the parameters, can be one of the requirement. So the things will be done effectively. Other input should also be suggestion given by patrons about how to improve the cleanliness. Okay. Challenges क्या है? लीटर में क्या क्या आता है वो पहले फाइंड आउट करो। व्हाट इज लीटर? सेकेंडली, टॉलरेंस लेवल क्या है? अब टॉलरेंस लेवल अगर ज्यादा है तो ठीक है, टॉलरेंस लेवल अगर कम होगी ना तो प्रोहिबिट patrons to carry these things in the auditorium or in the main area of Taj Mahal. जैसे काफी सारे ऑडिटोरियम है जहां पे प्लास्टिक बॉटल अलाउड नहीं है। वानखेड़े जाओगे तो प्लास्टिक बॉटल तुम लोग लेके नहीं जा सकते। ऑफ कोर्स देयर इज अ कमर्शियल एंगल टू दिस, बट स्टॉप तो कर ही सकते हो ना। यू मे रेस्ट्रिक्ट कैरिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स इनसाइड। एडिबल्स फूड आइटम्स नहीं चलेगा। तो जब मैं अंदर ही नहीं लेके जाऊंगा तो अंदर फेंकूंगा भी नहीं। यू ऑल्सो डोंट सर्व। जैसे ट्रेन में, अभी पता नहीं, अभी शायद प्लास्टिक कप वापस चालू हो गया, लेकिन पहले कुल्लड़ चालू किया था। प्लास्टिक कप्स, पहले तो प्लास्टिक कप आता था। मैं जब छोटा था हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो प्लास्टिक कप आते थे। चाय 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 करके आते थे वो लोग। अब मेरे ख्याल से शायद पेपर कप्स है। पर बीच में एक फेज था, अब यूपी बिहार में जाओगे तो वहां पे कुल्लड़ ही चलता है मिट्टी का। यूज करो, थ्रो करो। और थ्रो करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज क्ले ओनली, सो इट डजंट मैटर। पेपर फेंकोगे तो प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी इन क्लीनिंग and different ways of measuring the effectiveness. Certain forms of litter out of operational control, such as animal, birds dropping, are also considered as part of litter. इसलिए काफी जगह पे लिखते हैं ना, pets not allowed. To be very honest, इंडिया में तो इंसान को भी नहीं समझता किधर क्या करना चाहिए। हाँ, we have to write, यहाँ पेशाब करना मना है। You have to write on the wall. Actually, there should not be, I mean, it should not be needed. It's not needed. It's not needed. You're not supposed to do that. यहाँ थूके, थूकना मना है। Why you want to write it? तो एनिमल्स की क्या बात कर रहे हो, इंसान भी वैसे ही है अपने इधर। सो बेसिकली मेक स्ट्रिंजेंट लॉज। थूकते हुए पकड़ा तो सिर्फ फाइन नहीं लगेगा, पहले मारेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, फिर तोड़ के वापस जोड़ेंगे, फिर फाइन लगाएंगे। पीपल शुड सी इनकलकेट दैट हैबिट आइदर नेचुरली और फोर्सफुली। जर्मनी में जाके थूकते नहीं अपने लोग, इधर थूक देते। इंडिया है, फाइन्स कैन बी अप्लाइड। जैसे सिगरेट फेंकने के बाद फाइन है, अभी रास्ते पे नहीं फेंक सकते। दादर स्टेशन से नीचे उतरोगे तो दिखेगा तुम लोग को, कुछ भी तुम लोग ने चॉकलेट खाया नीचे फेंका तो पकड़ लेते बीएमसी वाले, 200 रुपए फाइन। वी हैव टू डू दिस। तो बेसिकली इफेक्टिवनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू हैव अ कंट्रोल ओवर इट। इफेक्टिवनेस के लिए यू हैव टू हैव अ कंट्रोल ओवर इट, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बोरीली में, इट्स वेरी फेमस फॉर गुजराती थाली, सागर करके। अनलिमिटेड गुजराती थाली, फैंटास्टिक रेस्टोरेंट, गुड फूड। उस बिल्डिंग में आप एंटर करोगे ना, अभी पता नहीं है कि नहीं, बट पहले तो ऐसा मैसेज था कि आप ही थूकना मना है। अगर आपको थूकते वक्त पाया गया तो पहले मारेंगे, फिर पुलिस के हवाले करेंगे। इट्स अ बोर्ड।
Puneri boards are famous, no? This is in Borivali. अगर थूकते वक्त पाए गए तो पहले मारेंगे, लिखा है. See that, तुम लोग डर पैदा करो या अवेयरनेस पैदा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. There should not be litter. Indicator of effectiveness. There has to be a conscious civic sense of duty not to litter, failing to which this initiative will most likely be ineffective. Therefore, while measuring performance of effectiveness, collection of more litter does not necessarily indicate effective operations. More litter requires more cleaning. Therefore, it is actually not a positive indicator of effectiveness. On the contrary, in the long run, less litter collected to maintain the desired level of clean and to maintain the desired level of cleanliness will be considered as effectiveness. इस बार effectiveness मतलब higher the better नहीं, lower the better है. And then finally, what was the third thing asked? Recommend general guidelines. अरे यार ये तो पढ़ लेना तुम लोग. Read that. General guidelines में क्या लिखा है? Has the objective of cleaning operation been achieved as per the guidelines? You have to comment on that. Secondly, if the answer is yes, all the expenses within budget. Are the expenses in budget? Cost overrun can also be justified if the effectiveness is achieved. That means your resources have been used in the best possible manner. And finally, if the answer is no for the first one, if the operations are not effective, how much is the variation? किधर कम पड़ गए? कितना कम पड़ गए? Find out the areas which you couldn't cover. If operations have been ineffective to a larger extent, then a cleaning drive initiative has to be reformed. ये देखो, ये भी तुम लोग को बोल रहा था. If you can't inculcate, force them. If you can't inculcate, force them. मैं तो बोलता हूँ मारो पहले. That is the only solution we have. Of course, you can't write it in the exam. But anyway, so that was your overall approach of how to carry on this cleaning drive and all that. The last case study is about pricing strategy. I think it will be done. Extra session नहीं लेना पड़ेगा. मुझे शायद लगा था pricing इसमें केस स्टडी में ज्यादा टाइम जाएगा, बट यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग रेडी. प्लस इसके सारे पॉइंट्स हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में टॉपिक के तौर पे बोलो या डिस्कशन में कवर किया ही. और केस स्टडी का ऐसा है ना, तुम लोग 50 पढ़ोगे तो भी 51st विल बी न्यू, 5 पढ़ोगे तो भी 6th विल बी न्यू, 10 पढ़ोगे तो 11th विल बी न्यू फॉर यू. तो मैंने स्ट्रेटेजी दी है, समराइज so that you will get to know what exactly is happening, what are the problems and what are the solutions. समझ में आ रहा है? Last one, pricing strategy. ITB is a multi-brand, diversified conglomerate corporation that deals with a wide range of industries from FMCG, from paper, from hotels to FMCG, from paper to tobacco, from IT solutions of agro business to various divisions and departments which are working independently. Managers of some of these divisions are accountable for their cost and revenue, while in others, they are additionally accountable for their capital employed too. ITB is still diversifying its business. FMCG division. In the recent quarter, the FMCG division of ITB launched Moon Feast,
Dream cream biscuits, which are flavored in two cream biscuits, which are flavored twin cream biscuits. These biscuits are available in two different sizes of packing, 5 for 35 grams, 10 for 80 grams. Division decided the price considering the cost is incurred and a preferred margin. The margin stipulated by managers for 2 years period. 35 grams के लिए 5, 80 grams के लिए 10. So the price differentiation is perfect. वो है ना, ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो कम प्राइस में मिलेगा. The market segment relevant to such cream biscuits is highly competitive and hostile. Customers are price sensitive too. Competition and plus price sensitive. But the segment has a turnover value of nearly 4.5 crores during each recent quarter. So there is a segment which is profitable. There is a segment which has a potential. So basically market size is not a problem for you. You just think about increasing market share. The division is looking forward to launching a range of flavors. A report containing investment requirements during the new flavors sent to corporate head office for approval. As per the market research report of Trade Association during the same quarter, total of around 375 metric tons biscuit were sold in the relevant segment. Agro division is a high yield variety. A high yield variety of hybrid maize seed HY10 was developed after incurring a huge R&D cost. Babu, huge R&D cost, that means your product is new. So I have an option of penetration pricing. I have an option of skimming pricing. मेरा चार्ट याद है, प्राइसिंग में दिया था, एक चार्ट दिया था, अभी तक काम आ रहा है. Maize is largely a rabi crop, and seed rate depends upon the factors like purpose, seed size, season, plant type, sowing methods. For winter and spring maize, seed rate of 8 to 10 kgs per acre is desired, whereas for sweet corn, baby corn, popcorn, popcorn, seed rate is 8, 16 and 7 kgs per acre is respectively desired. HY10 committed and provide high yield and big deep grains, also reduces the seed requirement to 80 to 90% as aforementioned. Sippy 555 was a prominent seller prior to launch of launch of Evo HY10, and its 4 kg packing was sold for in the range of 1450 and 1500 generally. Other players are also working on developing HYV maize seeds. Agro division has lined up many such more development products which are duly approved by the divisional head, and some are in pipeline. HY10 approved by the regulator and government authorities 3 seasons ago, available for commercial sale thereafter in the market, and HY10 sold in a pack of 2, 10 and 25 kgs only. Figures pertaining to these 3 seasons are tabled below. तुम लोग का सेल कितना हुआ? 7,460,000, मतलब बेसिकली 74,60,000. 149.2 क्विंटल, 149.2 क्विंटल, तो 50,000 पर क्विंटल उसकी सेलिंग प्राइस आती है. पर क्विंटल 1 क्विंटल इज 100 kgs, सो 500 रुपया पर किलो. अरे पूरा डेटा किलो में दिया है, इधर एक पर क्विंटल दिया, तो मैंने पूरा क्विंटल को केजी में कन्वर्ट कर लिया. हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो बाकी के 2 निकालो, आगे जाने की जरूरत नहीं, पहले बाकी के 2 निकालो. 1
13185 डिवाइडेड बाय 293 डायरेक्ट कर लो। कितना आया? 13185। 450। अरे यस सर नो। एंड दिस इज 400। ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस। ITB hotels. ITB hotels are known for state-of-art amenities and a great hospitality. Occupancy rate ranges from 70% to 80% on an average, but for few metropolitan locations, the occupancy touches to 90% to 100%. ITB hotels follow tariff policy wherein tariff is based upon the cost of living of individual city wherein hotel is located. Occupancy rate. Occupancy rate of individual hotel when the customers check in. Dr. Angel Gupta, who is a regular guest, is in ITP in Mumbai due to her medical conferences, surprised to see the variation between tariffs. She was charged 5,400 per night when her stay during the trip falls on weekends, and 8,000 weekdays for 5,400 and weekends 8,000. Naturally. Comment on ITB's organizational structure and appropriateness. Define the responsibility accounting and responsibility center. Explain profit center and investment center. Identify the nature of FMCG and agro divisions and evaluate the pricing strategies in terms of FMCG, agro and ITB. पहले एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर एक के बाद एक धनाधन डिस्कस कर लेते हैं। रीड द क्वेश्चन ऑन योर ओन। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो।
चलो आ जाओ. So what is a structure? Organizational structure. It basically outlines the role of individuals in the organization and decides the way in which authority and responsibility can be allocated among them, and then how they are coordinating with each other. So we have various divisions. They are operating independently. Basically, they're all our strategic separate business units. That means decision making is decentralized. Common sense. Then it's a suitable structure for diversifying. Since my decisions are decentralized, every matter will not come to the owner. Managers will take the decision on their own. Since the multi-blood diversified corporation, we have a wide range of industries, wide range of products. So some functional departments are working horizontally throughout the organization, known as corporate function and shared support. Let's say accounts, HR and payroll. It can be a common department for all divisions. ये organization structure हुआ. Now responsibility center and profit center वगैरह क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनना. Responsibility center का मतलब profit center in short. Similar. कैसा है? All my branches in Mumbai are cost centers because they cannot have their own individual fee structure. जो फीस अंधेरी में डिसाइड होगी, जो फीस हेड ऑफिस में डिसाइड होगी, the same fee will be applicable throughout Mumbai. So whether you are taking admission in Kalyan branch, whether you are taking admission in Thane branch, whether you are taking admission in Andheri branch, Borivali branch, Chennai Road branch, Vashi branch, Mulund branch, doesn't matter. Fees will remain same. So all my managers in charge of these branches will not be held responsible for profit. मैं उनको बोलूंगा क्या रे तेरे ब्रांच का प्रॉफिट कम हो गया, बोलेगा सर आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हो अंधेरी में बैठ के, बड़े कॉस्टिंग के बाप समझते हो खुद को, आप डिसाइड करते हो. हाँ, हमको दो मौका. If we can't decide the selling price, don't hold us responsible for profit because you are the one who's deciding the selling price. मैं बोलूंगा हाँ बाबा मेरी गलती. So they are not responsible for profit, they are responsible for cost. मैं उनको इसलिए नहीं डांट सकता क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिया, मैं इसलिए डेफिनेटली डांट सकता हूं कि तू ज्यादा खर्चा क्यों कर रहा है. इंस्टेड ऑफ हायरिंग, अगर तेरा काम 3 अटेंडेंट रिसेप्शनिस्ट में हो जाता है तो तेरे को 6 की क्या जरूरत है. इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ रही है, क्लासरूम में लेक्चर नहीं चल रहा है तो भी एसी क्यों चल रहा है, लाइट क्यों चल रहा है. आई कैन होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट. लेकिन मेरा बैंगलोर ब्रांच, मेरा अहमदाबाद ब्रांच, मेरा रायपुर ब्रांच, मेरा दिल्ली ब्रांच, मेरा चर्नी रोड नहीं सॉरी मेरा बैंगलोर ब्रांच, मेरा हैदराबाद ब्रांच, चेन्नई branch, they are all profit centers for me because each branch has a different in charge who's a local faculty there or some local manager there, the native of that particular area. He knows the market very well. तो मैंने पूरा राइट उसको दे दिया, भाई तू डिसाइड कर, मार्केट तेरा, तू डिसाइड कर. They are deciding the fee structure. If I'm giving them permission, if I'm giving them authority to decide the fee structure for that area, they are responsible to give me profit of that area. That's a profit center. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब प्रॉफिट सेंटर. नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब इट्स नॉट अ प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर. समझ में आया? ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लो, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3. अच्छा, इन्वेस्टमेंट सेंटर मतलब इट विल बी कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच. प्रॉपर्टी मैं तो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी भी तू ही देख, स्टाफ भी तू ही अपॉइंट कर, तेरा धंधा, योर बिजनेस. योर इवैल्यूएशन विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बट ऑन द बेसिस ऑफ ROI. तो तू बड़ा प्रॉपर्टी लेके बैठेगा मेरे पैसे से, प्रॉफिट नहीं, ROI पे बेस्ड होगा. दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर. जस्ट रीड पॉइंट नंबर 2 and 3 क्विकली.
पढ़ लिया? Isn't it the same thing? हमने जो बोला, हम लोग जो डिस्कस किया वही लिखा है. नाउ नेक्स्ट इज एफएमसीजी डिवीजन. क्या पूछा है? Identify the nature of FMCG and agro divisions. Now your FMCG is a profit division because it can have its own price as well as cost. But for investment, it has to take an approval of the head office. So it is not investment center, it is profit center. As it is mentioned in the case that a report containing investment regarding new flavors, new flavors sent to corporate head office for approval. Moreover, the desired margin which is used to determine the price also stipulated by the managers only. So it's not a investment center, it is profit center. Agro division is an investment center because it takes decision about investment on its own without intervention by the head office, as it is mentioned in the case that agro division has lined up many such development projects which are duly approved by the divisional head, and some are already in pipeline. And finally, fifth one, evaluate pricing strategies. अरे यार, ये तो तीसरा टॉपिक है, तीसरा सब्जेक्ट ऐड कर दिया इन लोगों ने. प्राइसिंग आ गया अभी अचानक से. ओके, so we are deciding prices upon the cost incurred and desired margin stipulated by the manager. The important role, it is important to note the limitation of cost plus margin approach. It ignores the price charged by the competitor. कॉस्ट प्लस मार्जिन का मतलब जो हम लोग इंटर में करते थे, कॉस्ट शीट बना के कॉस्ट निकालो, मटेरियल ले लो, लेबर ले लो, अदर कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐड करो, टोटल कॉस्ट निकालो, प्रॉफिट ऐड करो, सेलिंग प्राइस डिसाइड करो, जैसे कस्टमर वेट कर रहा है मार्केट में. दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, व्हिच इज impossible if you have competitors. It is impossible if you don't know how much your customer is. It is not impossible to implement if you don't know how much your customer is required to, interested in paying you. कंप्यूटर का प्राइस आपको पता नहीं है, कस्टमर कितना पे करता है वो आपको पता नहीं है, और आपका कॉस्ट कंट्रोल अगर सिस्टम नहीं है तो फिर नॉट पॉसिबल. सो प्रोडक्ट्स एट अ मिनिमम प्राइस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट and acquire market share. See, it is mentioned in the case that the market segment relevant to such cream biscuits is highly competitive and hostile, customer are price sensitive, so selling them at a product at premium price is not a good strategy. It's a common sense. So the selling price should be reasonable. It is advisable for division manager of FMCG to pick the penetration strategy to gain market share, and once market share is at reasonable level, you can raise your price to the average level. Correct? So 4.5 crores turnover, 375 metric ton. 371 metric ton is 1000 kgs. So 120 का प्राइस चार्ज किया इन लोगों ने, बेसिक प्राइस. एग्रो डिवीजन, स्किमिंग कैन बी अप्लाइड. ये देखो हमने निकाला था, अरे याद है? याद नहीं तो दिखाई देगा कम से कम. ये देखो, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया है, यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर स्किमिंग. प्राइस स्किमिंग सीम्स अप्रोप्रिएट एनर्जी as huge research and development cost can be recovered. The customer might not mind paying a high price for why, because it is committed and actually provide the yield. It is giving you result. Customer will pay you high price. So basically it is a product which is newly launched, which is useful for the customer, new for the market. You can go for skimming price. Hotels.
The tariff is based on cost of living of an individual city. City to city rate differ करेंगे. When customers check in, it means a hotel is relying upon the strategy of differential pricing. वीकेंड के लिए अलग रेट, वीकडेज के लिए अलग रेट. तो फुटफॉल देख के तुम लोग अप्लाई कर रहे हो. जैसे आज तुम लोग टूरिज्म देखोगे तो गोवा, केरला, सीजन का प्राइसिंग अलग होता है, ऑफ सीजन प्राइसिंग अलग होता है. सीजन का प्राइसिंग अलग होता है, ऑफ सीजन प्राइसिंग अलग होता है. डिफरेंशियल प्राइसिंग. सो पीक लोड प्राइसिंग are charging 8,000 and otherwise 5,400 on weekdays. So the impact of peak load pricing will be more easily to be seen in the metropolitan locations when the occupancy rate touches 90 to 100%. आपको पता है एयरलाइन कंपनी में भी डिफरेंशियल प्राइसिंग होता था पहले. इट वाज नॉट ऑलवेज पेनिट्रेशन प्राइसिंग. Yes, it started with penetration pricing, but entire flight is not booked on a penetration pricing system. It is differential pricing. First 100 seats are given the lesser rate. अब 6 rows into 30, 6 rows into 30, जनरली 180 का कैपेसिटी होता है बोइंग का. तो फर्स्ट 80 थ्रो अवे प्राइस, 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, 1,500 रुपया. और पहले 80 खत्म होने के बाद फिर 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, लास्ट डे को करो. आई हैव सीन हाईएस्ट प्राइस ऑफ 75,000. I was returning from Ahmedabad to Hyderabad to from Hyderabad to Mumbai. Jet Airways flight. मेरा पहले से बुक था. कीड़े. I was just exploring. तो मैंने सेम फ्लाइट का रेट देखा 3 घंटे पहले. I was about to leave. ने रेट चेक किया. It was 72 rupees, 72,000 समथिंग. तो अगर लास्ट सीट बचा है, लास्ट 3 सीट बचा है, उसमें भी हाई प्राइसिंग से प्रॉफिट मार दो. कोई ना कोई होगा जिसको अर्जेंसी होगी, वो जाएगा. गया तो ठीक है, वरना वैसे भी देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट फॉर इट. देयर इज नो रेलेवेंट कॉस्ट. क्योंकि 170 से 177 ऑलरेडी पैसा दे दिया है. 3 सीट खाली भी रहते तो फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर भर गए तो सीधा 72,000 मिलेगा. Are you getting me? This is differential pricing. That's it. So that's the end of your case study part. It was basically not a separate chapter as such, to be very honest. मैं ना तुम लोगों को एक लिंक भी भेज दूंगा. आई एम प्लानिंग टू डू दैट. इसमें मैंने केस स्टडीज और केस सिनारियोस दोनों किया है. आई विल हैव टू सर्च इन द सिस्टम कहाँ पे है. अदरवाइज मैं यूट्यूब का लिंक दे दूंगा. मुझे ढूंढना पड़ेगा. दैट विल गिव यू एडिशनल प्रैक्टिस. बाकी आपको डिस्कशन जो भी करना है, दिस इज माय इंस्टा आईडी. You can contact me there. Yes, 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 Priya. I'll do that. देखो अभी फिलहाल एमसीक्यूज को लेके या पेपर पैटर्न को लेके कोई आइडिया नहीं है. जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी वैसे वैसे मैं तुम लोग को वीडियोस भेज दूंगा. वी विल अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ जेकेएससी और आपको सपोर्ट मिल जाएगा. उसका टेंशन आप मत लो. ठीक है. कंप्यूटर जी, प्रिया को अनम्यूट किया जाए क्या टेलीग्राम पे? अर्णव हेलो. देखो मैंने ब्रांच वाइज सिर्फ बोला है. आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी मुझे कांटेक्ट करोगे, यू आर मोस्ट वेलकम. मैंने सिर्फ चैनलाइज करने को बोला था. लेकिन अहमदाबाद में भी अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग बैचेस है. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. इंडिविजुअल बेसिस पे लिंक मांगोगे, लिंक भेज दूंगा मैं. कोई टेंशन नहीं है. आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट दैट लिंक फर्स्ट. मुझे वो चेक करना पड़ेगा. सो आई विल डू दैट. मुझे वो अकॉर्डिंगली लर्निंग कर का भी लेक्चर अपलोड कर लूंगा मैं. सो यू विल गेट इनफ टाइम टू गो थ्रू दैट. ओके. यू आर welcome to contact me
for any problem you have. Syllabus is over, relation is not. So whatever you need, any sort of help you need in my self-paced module, in costing, in strategic cost management and performance evaluation, I will be there. इंस्टा पे डाउट पूछोगे तो भी चलेगा, हेल्पलाइन पे पूछोगे चलेगा. इंस्टा पे बेटर है क्योंकि वो फोन मेरे पास हमेशा रहता है. हेल्पलाइन आई कीप इट एट होम, रात को जाके मैं मैसेज चेक करता हूँ. इंस्टा तो मेरे पास ही रहता है, मैं कभी भी डाउट्स का आंसर भेज सकता हूँ आपको. यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. मैं रिप्लाई तभी करूंगा जब मेरा लेक्चर नहीं होगा, बट एट अर्लीस्ट. तुम लोग में से जितने लोगों ने मुझे अभी तक मैसेज किया है, यू वोंट फाइंड इवन 2 सेइंग दैट आई हैव नॉट सॉल्व द डाउट्स. नो, पीडीएफ इज नॉट रिक्वायर्ड. आई यूज्ड टू किसी से नोट्स ले ले जिसने पूरा लेक्चर कॉपी किया है, यू विल बी एबल टू गेट इट. क्योंकि कैसा है, नोट जो मैंने डिक्टेट किए है वो मेरे पीडीएफ में नहीं होंगे. समझा बेटा? प्रिया जी. हेलो या बोलिए. सर, मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक डाउट था, क्वेश्चन नंबर बोल. 5. उसका इंटरप्रिटेशन मेरे को समझा नहीं अच्छे से, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट योर नॉलेज, पेज नंबर 13.58. बोलिए. सर, तो ये जो एक्टिविटी है, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, मतलब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, वो एक्टिविटी लेवल और कॉस्ट ड्राइवर से कैसे कनेक्टेड है, वो मेरे को समझा नहीं. देखो उन्होंने क्या किया है, रिसीवेबल्स, पेएबल्स और ट्रैवल एक्सपेंसेस करके 3 एक्टिविटीज बना दिया. तीनों का एक कॉस्ट ड्राइवर रख दिया है. जैसे रिसीवेबल के लिए उन्होंने कॉस्ट ड्राइवर रखा है, पेएबल के लिए उन्होंने कॉस्ट ड्राइवर रखा है, और सबका रेट देके रखा है आपको. ओके. अब ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए हमने ढूंढा था, ये कितना था, 20,000 था ना. यस. 10 lakhs डिवाइडेड बाय, हाँ तो 2,000 था ये, बराबर. लेकिन नंबर ऑफ बैचेस अपने 2 लाख थे. तो जिसका बैच बेस है, पेएबल को मैंने 2 लाख से डिवाइड करके रेट निकाला था, तो वो रेट मैंने 2 लाख पे वगैरह अप्लाई किया. यहाँ पे भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एक बैच 2,000 का है, एक बैच साइज 500 का है, तो नंबर ऑफ बैचेस 2,000 होंगे ना. तो बेस अलग था. एंड रिसीवेबल के लिए उन्होंने आउटपुट ही बेस बनाने को बोला था. सो 948 इज माय एक्चुअल आउटपुट, उसी को कंसीडर किया हम लोगों ने. दैट्स व्हाट आई सेड ना. जैसे ही आपको बेस मिला, आप उस बेस को वेरिएबल ओवरहेड की क्वांटिटी ट्रीट करो. मुझे स्टैंडर्ड डेटा कितने लेवल पे दिया है मुझे फर्क नहीं पड़ता. माय एक्चुअल आउटपुट इज 948. तो माय एंटायर स्टैंडर्ड, ऑल माय एक्टिविटीज विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम 10 लाख लेवल. 10 लाख का 2 लाख तो 948 का कितना, 10 लाख का 2,000 तो 948 का कितना करके हमने कन्वर्ट कर लिया. सर, ये कॉस्ट ड्राइवर पे रेमिटेंस रिसीवेबल से कैसे कनेक्टेड है, मेरे को वो नहीं समझा एक्चुअली. रिसीवेबल इज बेस्ड ऑन रेमिटेंस, बराबर. यस. तो उसकी एक्टिविटी लेवल आप मेजर करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स पे. तो 10 लाख यूनिट बेचे मतलब 10 लाख रेमिटेंस आए. हाँ हाँ, एंड पेबल्स का जितना इनवॉइसेस रेज किया पर बैच. पेएबल के लिए इनवॉइसेस आर रेज पर बैच. कितने बैचेस है, 2 लाख, तो 2 लाख इनवॉइसेस होंगे. ओके ओके, अंडरस्टूड. ट्रैवल एक्सपेंसेस ट्रैवल क्लेम्स के हिसाब से, ट्रैवल क्लेम्स इज पर बैच 500 का है मतलब 2,000 बैचेस होंगे. यस यस यस, अंडरस्टूड. थैंक यू. कीप इट सिंपल. देखो आपने एक चीज तो ऑब्जर्व की होगी, मैंने सिस्टम दिया वो फॉलो करो, कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो आप. एबीसी. करेक्ट. यस. वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही ट्रीट करो. 10 लाख के लिए दिया है एक्टिविटीज, उसको सबसे पहले कन्वर्ट करो 948 में. यस. रिवाइज और फिर उसको 948 के एक्चुअल से कंपेयर करो. हम्म. ये पार्ट हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग में डिस्कस किया था कि हाउ फिक्स कॉस्ट कैन बी स्प्लिट, हाउ फिक्स कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स. यस. थैंक यू बस तो उस वेरिएबल की तरह ट्रीट करो. आई होप यू गाइस यू वर कंफर्टेबल.
ओके देन, सॉल्यूशंस वगैरह अपने दोस्तों से ले लेना तुम लोग, उधर मिल जाएगा तुम लोगों को।